एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम BPAG 171 का यूनिट 3 देखेंगे। बिफोर मूविंग टू द क्लास, अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट BPAG 171 का नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूँगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है, तो अगर कोई चाहे तो व्हाट्सएप में मैसेज करो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्लास। आज हम BPAG 171 यूनिट 3 देखेंगे, नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर्स। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स लाइक जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेटोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, अब हम ये टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। पहला, जियोफिजिकल डिसास्टर्स। दीज डिसास्टर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ्स इंटरनल प्रोसेस। अर्थ का अंदर के प्रोसेस की वजह से ये जियोफिजिकल डिसास्टर ट्रिगर होता है, लाइक earthquakes, volcanic activity, landslides and tsunamis. For instance, earthquakes are caused by rock ruptures along fault plains and their magnitude is measured using seismic data. earthquake की तीव्रता हम seismic data के उपयोग से मेजर करते हैं। Okay, the Great Chilean Earthquake 1960, the largest recorded earthquake with a magnitude of 9.5. The largest recorded earthquake कौन सा है? The Great Chilean Earthquake जो 1916 में हुआ था। सेकेंड डिसास्टर जो जियोफिजिकल डिसास्टर के अंडर आते हैं वो है volcanic eruptions such as Tambora which was happened in 1815. Okay. And the next subcategory under this is landslides, also known as slope failures. Okay, these are the movements of earth, rock or debris down a slope due to gravity. ओके, ये किस कारण से होता है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण अर्थ, रॉक और डेब्रिस का मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। ओके, लैंडस्लाइड्स रेंज फ्रॉम स्लो ग्रेजुअल स्लाइड्स टू सडन रैपिड इवेंट्स. Okay, it will become more hazardous due to their speed and impact. ये पहले slow and gradual slide होता है, फिर एकदम से वो sudden and rapid events बन जाते हैं and it will become more hazardous. Okay, landslides तीन तरह की होते हैं, जैसे earth slides, rock falls and debris falls, which can cause minor disruptions or severe social and economic disruptions. Okay, natural triggers for landslides include increased groundwater pressure, loss of vegetation, erosion by rivers or waves, snow or glacier melting, heavy rains, earthquakes and volcanic eruptions. ये जो landslides है वो किन किन चीज़ों से ट्रिगर होता है? जैसे कि भूजल दबाव, वनस्पति का नुकसान, नदियों द्वारा कटाव और बर्फ या ग्लेशियर का पिघलना और हेवी रेन, भूकंप, ऐसी कई चीज़ों से लैंडस्लाइड्स ट्रिगर होता है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी से भी ये ट्रिगर होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, वाइब्रेशंस फ्रॉम मशीनरी एंड अल्टरिंग स्लॉप शेप्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हम हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर के बारे में देखेंगे। हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर में आते हैं एवेलेंचे. Avalanche is the rapid descent of snow down a mountainside similar to a landslide but involving snow. एक पहाड़ी क्षेत्र से बर्फ का तेज से नीचा गिरना है जो लैंडस्लाइड की समान है, लेकिन इसमें बर्फ भी शामिल है। Okay, as it moves downhill, an avalanche gains speed and force, turning even small snowslides into significant disasters. Okay, avalanches दो तरह के होते हैं, surface avalanche and full depth avalanche. Surface avalanche का मतलब क्या है? Occurs when a snow layer slides over another layer with different properties such as dry snow over wet snow. फुल डेप्थ avalanche ये है कि involves the entire snow cover from the surface to the ground sliding down. Okay, avalanches can entrain ice, rocks, trees and debris and it can become highly destructive. ये avalanche तीन चीज़ों से ट्रिगर और इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि स्नो कंडीशन, स्लोप एंगल एंड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स लाइक वेदर और वाइब्रेशंस. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजिकल डिसास्टर, विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स. इट इंक्लूड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लाइक हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स. बोथ कैन हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी.
ओके हीट वेव्स prolonged period of excessively hot लंबे समय तक का गर्मी ओके एंड ऑफन ह्यूमिड वेदर दिस विल बैडली अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियां होगी particularly in vulnerable groups like older adults children and the sick. Here we can also see that the extreme temperature affect the urban areas more. They face higher risk due to poor air quality and the urban heat island effect. Okay, where concrete retain and release heat जिससे रात में temperature बढ़ जाते हैं. Next, cold waves and winter storms. These involve prolonged period of extreme cold. Okay, extreme cold can also damage crops, infrastructure and property. Okay, next is droughts which means a period of water shortage. Droughts कई तरह के होते हैं जैसे कि meteorological होता है जो region specific है एंड दूसरा agricultural droughts होता है hydrological droughts होते हैं ओके एंड socio economic droughts होते हैं ये कई तरह का droughts की नेम है मीटरोलॉजिकल जो है वो रीजन स्पेसिफिक है एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स जो है वो क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स जो है वो लो वाटर इन स्ट्रीम्स रिजर्वियर्स के कारण बनते हैं सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट्स जो है वो ह्यूमन का डिमांड एंड एक्सीड सप्लाई की वजह से होते हैं ओके इसका क्या क्या प्रभाव है इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन होता है रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर होते हैं इकोनॉमिक हार्म होता है एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी होता है ओके नेक्स्ट इज वाइल्ड फायर्स विच कैन बी डिफाइंड एज फायर्स इन रूरल एरियाज caused by lightning human activity or volcanic ignitions there are different type of wildfires like brush fires forest fires grass fires etc इसका प्रभाव क्या है destruction of property okay but it can also bring a positive change in ecology what is that positive change aiding plant growth in fire adapted ecosystems okay wildfire जो है वो हमारी हेल्थ में भी इम्पैक्ट करता है जैसे कि वाइल्डफायर का जो स्मोक है उसमें हार्मफुल पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है it can cause major health risk okay next is cyclones इसका डेफिनेशन है रोटेटिंग एयर मासेस अराउंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं साइक्लोन्स बोलते हैं इसका भी डिफरेंट टाइप्स है जैसे कि पोलर वोर्टिक्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेसोसाइक्लोन्स ओके साइक्लोन्स को क्या क्या ट्रिगर करते हैं वार्म सी सरफेस टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी हाई ह्यूमिडिटी ओके इसका इम्पैक्ट क्या क्या है लाइक पावरफुल विंड्स टॉरेंशियल रेन स्टॉर्म सर्जेस एंड कोस्टल फ्लडिंग ओके डैमेज प्राइमरली अफेक्ट्स कोस्टल एरियाज इनलैंड रीजन्स में फेस फ्लडिंग फ्रॉम हेवी रेन्स नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ नेचुरल डिसास्टर इज बायोलॉजिकल डिसास्टर इसका सब कैटेगरी है डिसीज एपिडेमिक्स इसका डेफिनेशन क्या है कि रैपिड स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो लार्जर पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं विद इन ए शॉर्ट टाइम टिपिकली 2 वीक्स और लेस लाइक कोरोना वायरस जो है वो एक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज है एंड इट अफेक्ट द लार्जर पॉपुलेशन विद इन ए शॉर्ट टाइम ओके इसका ट्रिगर्स क्या है कंटामिनेटेड फूड और वाटर सप्लाईज माइग्रेशन ऑफ डिसीज फैक्टर्स लाइक रैट्स एंड मॉस्किटोस okay these all are the type of natural disasters and its subcategories now we will look into the man-made disaster ये 3 तरह का होता है पहला complex emergencies and conflicts which is characterized by violence population displacement societal and economic damage दूसरा है famine widespread food scarcity caused by factors like crop failure or government policies leading to malnutrition, starvation, and increased mortality in the region. It is declared that 20% of households face extreme shortage of food. Child malnutrition exceeds 30% and daily death rates surpass 2 per 10,000 people. तीसरा मैन मेड डिसास्टर है ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स विच इन्वॉल्व्स डिसास्टर्स इन मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट मोड ऑफन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज ओके
जो एक्सीडेंट होता है ना, कार एक्सीडेंट्स, वो सब इसके अंडर आते हैं। और दूसरा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या है, वो केमिकल यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रियल फीड विच कैन हार्म पीपल्स लाइफ्स। ओके, सो ये दोनों भी मैन मेड डिसास्टर के अंडर आते हैं। दीज आर द मैन मेड डिसास्टर्स। ओके, चैप्टर खत्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लास। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।